गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हमने जो है लेक्चर में न्यूमेरिकल मेथड में बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज भी हम बाइसेक्शन मेथड से एक और क्वेश्चन करेंगे। ये फुल क्वेश्चन रहेगा, डिटेल क्वेश्चन का आंसर मैं डिराइव करूंगा यहाँ पर, जिससे आपको नॉलेज मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है और कितना टाइम इसमें लगता है। तो मैं समझा समझा कर और क्वेश्चन को करवाऊंगा। और एक तो इस पे लिखना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लंबी हो सकती है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। ठीक है। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x-3 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, so the given equation is x cube minus 5x minus 3 equals to 0। ठीक है। Let f of x equals to x cube minus 5x minus 3 equals to 0। जैसा कि आपको पता है बाइसेक्शन मेथड में हम f of 0, f of 0.5, 0.1, 1.5 स्पेस चेक करते हैं। जिन दोनों पर अपोजिट साइंस आते हैं, f of 0 या f of 1, जिस पे भी आता है उन दोनों के बीच में रूट लाई करता है। तो नाउ वी गोना चेक फॉर f of 0 के लिए चेक करते हैं हम कि हमारा जो रूट है f of 0 के लिए। तो मैंने लिख दिया f of 0 इक्वल्स टू क्या रहेगा, एफ ऑफ 0 के लिए क्या रहेगा ये चेक करेंगे। तो एक्स क्यूब, 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब मीन्स 0 का क्यूब मीन्स क्या होगा, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब मीन्स 0, -5 × 0 0। तुम्हारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ क्या रहेगा, माइनस ऑफ 0। ठीक है। विच इज, सॉरी, -3 विच इज लेस देन 0। तो वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। देन एफ ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 के लिए। तो एफ ऑफ 1 के लिए जैसे ही हम चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 के लिए किसके लिए चेक करेंगे, जस्ट मिनट। एफ ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, किसके लिए करेंगे बच्चों, एफ ऑफ 1 के लिए। तो इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। तो मैं लिख दिया 1, -5 × 1 इज -5, क्या हो जाएगा, -5, क्या हो जाएगा, -5। ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट 1 के लिए चेक किया। ठीक है। 0.5 के लिए मैंने रहने दिया, डायरेक्ट 1 के लिए किया चेक। अगर चेंज हो रहा होगा तो हम 0.5 भी बीच में चेक कर सकते हैं। एंड लास्टली -3। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा, ये 1 - 5 - 3 इक्वल्स टू -7। अभी भी साइन सेम है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये आएगा लेस देन 0। तो अब हम एफ ऑफ 2 के लिए चेक करते हैं, एफ ऑफ 2 के लिए चेक करेंगे। वैसे तो 1.5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर 2 पे साइन चेंज होगा तो मैं 1.5 के लिए भी चेक करूंगा, क्योंकि मुझे छोटे से छोटा डिस्टेंस में चाहिए इंटरवल। ठीक है।
तो मुझे छोटे से छोटे इसमें चाहिए। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसके लिए। अच्छा, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ किसके लिए। f(2) के लिए f(2) इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाता है कितना, क्या होता है 2 का क्यूब? 2 का क्यूब होगा 8। 2 का क्यूब होगा 8 -5 × 2 माइनस के 10 एंड -3। अगेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 अगेन लेस देन 0। नो अगेन फिर हम चेक करेंगे किसके लिए, f(2.5) के लिए। क्योंकि अब इतना हो गया तो किसी में तो रूट लाई करना चाहिए ना। जब क्वेश्चन दे रखा है तो रूट तो लाई करेगा। में भी जा सकता है 3 4 तक, बट हम 2.5 के लिए भी चेक करें। तो अब हम f(2.5) के लिए चेक करेंगे। ठीक है, f(2.5) के लिए चेक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेगी। 2.5 raised to power 3 2.5 minus 5 into 2.5 minus 3. When will you calculate 2.5 raised to power 3 in calculator? It is 15.625, and when you calculate 5 into 2.5, it is equal to 12.5 minus 3. Okay, when you calculate it, the answer is 0.125, which is greater than 0. So that means हमारा जो रूट है वो लाई करेगा 2 और 2.5 के बीच में। सो रियल root of the given equation lies in the interval 2, 2.5। तो हमारी इटरेशन 1 है। सो इटरेशन 1 तो इटरेशन 1 आ गई। सो इटरेशन 1 के लिए हमारे पास क्या है, टेकिंग
taking a is equal to 2, comma, and b is equal to 2.5. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 14 में कर देते हैं, बड़ा कर देता हूँ उसको। ओके, सो the first approximation, the first approximation to the root is given by x1 equals to that is a plus b upon 2. So the value of a plus the value of a is 2 plus 2.5 divided by 2. It's again when you divide 2 to 4, 4.5, 4.5 divided by 2 is 2.25. 2.25. Okay, so now we calculate f of f of now we calculate f of 2.25 is equals to, then 2.25 is equals to 2.25 raised to power 3 minus 5 into 2.25 minus 3. After the calculation, we get the answer as minus of 2.859, which is less than 0. और आपको पता है जब लेस देन 0 होता है तो हमारा रूट लाई करता है किसके और किसके बीच में, x1 b के बीच में. So the real root lies
in the interval 2.25, 2.5. Now iteration 2, so iteration 2 so taking A is equal to 2.25 and B is equals to 2.5. So the second approximation to the root is given by x2 is equals to, again वही फार्मूला a plus b over 2. Okay, then again यहाँ पे आएगा 2.25 plus 2.5 divided by 2. Again, this is equals to, if we calculate on the calculator, 2.25 plus 2.5 is 2.25 plus 2.5 is 4.75 divided by 2. This is 2.375. 2.375. Okay. Now we check for f of 2.375. Now we check for f of 2.375. So f of 2.375 is equals to 2.375 raised to power 3 minus 5 multiply by 2.375 minus 3. When we calculate this on scientific calculator, as it 2.375 raised to power 3 minus 5 into 2.375 minus 3, it is equals to minus 1.479 is equal to minus 1.479 which is less than 0. और मैंने ये जो कैलकुलेट कर रहा हूँ साथ साथ में ही कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ. साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इसके लिए यूज करते हैं. Then you know that it is less than 0, so the real root lies between, किसके किसके बीच में होगा. जब ये हमारा लेस देन होगा तो हमारा रियल रूट जो है वो लाई होगा x2 और b के बीच में. तो x2 तो हमारा क्या है, x2 जो निकला वो है 2.375. ठीक है जी, दिस वन 2.375. तो द
real root lies between in the interval 2.375 comma 2.5. Okay, now iteration 3. Iteration 3. This method is one of the slowest method and time consuming method. A rather slow method, बहुत ही स्लो मेथड है. लगभग 10 to 11 इटरेशंस में हमारा क्रैक टू 11 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आएगा. करेक्ट लगभग 10 इंटरेशंस होंगे. अभी हम थर्ड में पहुंचे हैं. 10 या 11, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं. लगभग मिनिमम तो मान के चलो 10 तो होती है. मिनिमम 10 में भी आता है, 14 में भी आता है. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. नाउ इटरेशन 3 के लिए टेकिंग a is equals to 2.375 and b is equals to 2.5. Okay. Now iteration 3 में अब the third approximation to the root is given by x3. That is third iteration, इसलिए x3 आ गया. वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे a प्लस b लगा दूंगा. इसकी जगह पे a प्लस b. ओके, वही फॉर्मूला. तो हमारा जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसमें लगेगा 2.375 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू. ठीक है, ये हमारी थर्ड इटरेशन चली हुई है. तो अब हम कैलकुलेटर पे करेंगे कैलकुलेट. 2.375 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4.875 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2.4375. तो हमारा आंसर आया 2.4375. थर्ड अप्रोक्सीमेशन का हमारा जो आंसर है ये आया. अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2.4375. थर्ड इटरेशन में हम अब निकालने वाले हैं एफ ऑफ 2. तो एफ ऑफ 2.4375 is equals to 2.4375 raised to power 3 minus 5 multiply 2.4375 minus 3. Now on the calculator we have to calculate 2.4375 raised to power 3 minus 5 into 2.4375 minus 3. The answer is minus 0
7055. ओके, नाउ अब आप बोल सकते हैं ये माइनस में आया, विच इज, सॉरी यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, विच इज लेस देन 0, तो दैट मीन्स हमारा रूट लाई करेगा, सो रियल रूट lies in the interval 2.4375, 2.5. ओके, नाउ अब हमारे पास आएगी इटरेशन 4. कौन सी इटरेशन आएगी? इटरेशन 4. तो टेकिंग a is equal to 2.4375 and b is equal to 2.5. So the fourth approximation to the root is given by x4 equal to, वही फार्मूला लगाना होता है आपको, फार्मूला तो सेम ही रहेगा. a प्लस b, a प्लस b ओवर 2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. तो अब हम आगे हमारे पास जो रूट, हाँ, अब हम ये फॉर्मूले से 2 पॉइंट कितना है हमारा 4375 प्लस 2.5, इसको कैलकुलेट करेंगे. 2.4375 प्लस 2.5 divided by 2, it is 2.4688. 2.4688 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ किया है हमने, 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दिया इसको. ठीक है जी. तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ, वही प्रोसेस 2.4688 उसी इक्वेशन में डाल करके, तो आपको पता चल गया कि 2.4688 का क्यूब, तो मैं डायरेक्ट ही अब सॉल्व करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा. अभी तो आपको पता चली गया होगा क्योंकि फोर्थ इटरेशन होने लग रही, क्योंकि 2.4688 x की जगह पर 2.4688 वैल्यू डालेंगे हम. तो 2.4688 2.4688 रेज टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 2.4688 minus 3. The answer is minus 0.296
7. Okay, which is less than 0. So the real root, real root lies in the interval. कौन से इंटरवल में लाई करेगा जब लेस देन 0 आता है? दैट इज x4 b, x4 कॉमा b के ऊपर। तो b हमने 2.5 लिया था पहले और x4 हमारे पास निकला 2.4688, तो हमारे पास आ गया 2.4688 कॉमा 2.5। ओके, अब हमारी इटरेशन 5 चलेगी। कौन सी इटरेशन चलेगी? इटरेशन नंबर 5, इटरेशन 5। तो टेकिंग a is equal to 2.4688 comma b is equal to 2.5. So the fifth approximation to the root is given by x5 equals to वही फॉर्मूला a plus b over 2, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा 2.4688 plus 2.5 divided by 2. If we calculate on the calculator, this will be 2.4688 plus 2.5 is equal to 4.9688 divided by 2. It is 2.4844. The answer is 2.4844. Okay. The answer is this. Is equal to 2.4844. ठीक है, ये आंसर आया। सो एफ ऑफ क्या निकालेंगे हम? एफ ऑफ f of 2.4844 शिफ्ट लगा के बंद कर दो और अब उसी इक्वेशन में डाल के आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। आपको पता है किस तरह से निकालना है। 2.4844 रेज टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 2.4844 minus 3. The answer is minus 0.0877. Okay, which is again less than 0. So you know that so real root lies within the interval कौन सी वाले में? x5 कॉमा b में। तो x5 हमारे पास निकला है 2.4844 कॉमा 2.5।
5। अभी इटरेशन 6 आई। कौन सी इटरेशन? इटरेशन 6। तो टेकिंग a इज इक्वल टू, क्या टेक करेंगे हम a को? टेकिंग a इज इक्वल टू 2.4844 and b is equal to 2.5. The sixth approximation, कौन सी अप्रोक्सीमेशन आ गई? सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन सिक्स्थ approximation to the root is given by x6 equal to, क्या आएगा? अगेन वही a प्लस b, वही आएगा। वही आएगा, दैट इज 2.4844। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग this on 2.4844 plus 2.5 is equal to 4.9844 divided by 2, it is 2.4922. The answer is 2.4922. Now we calculate f of 2.4922. अब हम कैलकुलेट करेंगे f of 2.4922. You know that how to calculate? In the calculator, I am calculating it 2.4922 minus of 3. It is 0.0182. So that means which is 82, which is greater than 0. अब यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा। पहले तो नेगेटिव आ रहा था तो हमारा ए ही चेंज हो रहा था, बट अब बी चेंज होगा। सो रूट लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में? रियल रूट, यहाँ पे रियल रूट डालना पड़ेगा। रियल रूट लाइज इन द इंटरवल। अब ए चेंज होगा, अब यहाँ पे आएगा x6 और कौन सा? यहाँ पे आएगा a और x6, a,x6। तो a है हमारा 2.4844, 2.4922
22। ठीक है जी। इसमें अब आएगी इटरेशन 7। कौन सी इटरेशन आएगी? इटरेशन नंबर आ गई 7। तो टेकिंग A is equal to 2.4844 and B is equal to 2.4922. Okay. The seventh approximation to the root is given by x7 is equal to, वही फॉर्मूला मैं फॉर्मूला अब a प्लस b ओवर 2, आपको पता ही है हमें क्या निकालना है। इट इज 2.4844 प्लस 2.4922, ये निकालना है। 2.4844 प्लस 2.4922 is equal to divided by 2, it is equal to 2.4883. 2.4883. Now we have to calculate f of now we have to calculate f of 2.4883. Now I'm calculating 5 into 2.4883 minus 3. It's again minus of again I'm calculating 2.4883 raised to power 3 minus of 5 into 2.4883 minus of 3, it is minus of 0.0348, which is again less than 0. Gain less than 0. So real root lies in the interval अब ये लेस देन 0 आया तो हमारा कौन चेंज होगा? a होगा। तो a होगा x7। अब x7 आया 2.4883 कॉमा b एज इट इज 2.4922 रहेगा। ओके नाउ अब आएगी हमारे पास इटरेशन 8। taking a is equal to
2.4883 and V is equal to 2.4922. The eighth approximation to the root is given by x is equal to, again वही फार्मूला, a plus b over 2. Now again I'm calculating, control B. I'm changing some 2.4883. Now we have to find the 2.4883 plus 2.4922, which is equal to, divided by 2, 2.4903 02, sorry, 2.4902. Now we have now again we have calculating now f of 2.4902, which is equal to, I'm calculating 2.490, 2.490, 2.4902 raised to power 3 minus 5 into 2.4902 minus 3, which is equal to, again, minus of 9.0306, which is again less than 0. So our root, so real root lies in the interval, अगेन लेस देन है, तो अब हमारा क्या चेंज होगा, ए चेंज होगा. ए क्या होगा, 2.4902 कॉमा 2.4922 रहेगा. अगेन नाउ इटरेशन iteration 9. Now iteration 9 is taking a is equal to 2.4902 comma and v is equal to 2.4922. So the ninth approximation to
the root is given by x9 is equal to, why formula I'm directly now putting the values of a and b, a plus b over 2, 2.4902. Calculating 2.4902 plus 2.4922 divided by 2 is 2.4912. 2.4912. Okay. Now we have to calculate the f of 2.4912. Now f of 2.4912. अभी आप देख रहे होंगे इटरेशन 8 और इटरेशन 9 के जो आंसर है 2.490249 इसमें सेम है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। अभी थर्ड डेसिमल प्लेस तक जब तक नहीं आता सेम आंसर तब तक हम इसको कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो एफ ऑफ 2.4912 को हम कैलकुलेट करेंगे। माइनस ऑफ 5 इंटू 2.4912 माइनस 3, ये अगेन हमारा आएगा। अब ये आया 4.581 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हमारा रूट कहाँ लाई करेगा। सो रियल रूट, so real root lies in the interval 2.4902 comma 2.4912. Okay, now अब आएगी इटरेशन 10। इटरेशन 10 iteration 10. So taking a is equal to 2.4902 and b is equal to 2.4912. So again the 10th approximation to the root is given by x10 equals to, वही फार्मूला a प्लस बी ओवर 2, तो मैं डायरेक्ट a प्लस ए और b की वैल्यू डाल रहा हूं। a की वैल्यू है 2.4902
plus 2.4912. So after calculating 2.4902 plus 2.4912 divided by 2, it is 2.4907. 2.4907. Okay, now we have to calculate f of 2.4907. Now f of 2.4907 is equal to, now I am calculating f of 2.4907. 5 into 2.4907 minus 3. It is minus of 2.2271, which is again less than 0. So real root lies in the interval कौन से इंटरवल में होगा? अब हो गया x9 b में, x9 b में, तो शिफ्ट तो x9 जो है हमारा नहीं सॉरी x10 और b में, हम 10th इंटरेशन की ना लास्टली, अभी तो ये होगा हमारा x10 और कॉमा v में। तो x10 की वैल्यू हमारे पास निकली है 2.4907 कॉमा जो हमारा b है वो है 2.4912 2.4912. Okay, now 11th iteration 11, अभी भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। इटरेशन 10 को देखोगे आप और 9 को, तो 49 सेम है, आगे 1 और 0 है। तो टेकिंग a is equal to 2.4907 and b is equal to 2.4912. The 11th approximation to the root is given by x11 equal to वही फार्मूला a plus b over 2. तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरी वैल्यूज क्या आएंगी? a की वैल्यू आएगी 2.4907 एंड b की वैल्यू आएगी 2.4912. ओके, आई एम कैलकुलेटिंग 2.4907 plus 2.4912 divided by 2. Then again मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2.4907 plus 2.4912 equal to divided by 2. It is 2.4909. 2.4909. As you can see the theme, अब आप देख रहे होंगे 10th इटरेशन और 11th इटरेशन में फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस सेम है। तो हमने जो हमारा आंसर है वो प्राप्त कर लिया है।
correct up to 3 decimal places. So we have to write hence from 10th and 11th iteration we see that there is no change in the successive approximations to root up to first 3 decimal places. So a real root of given equation is given by x equals to 2.490 correct up to correct up to 3 decimal places. ओके दैट्स ये हुआ आपका क्वेश्चन. अब शुरू से एक बार फिर से चेक कर सकते हैं जो हमने किया है. चेक करिए. तो लगभग 11 इटरेशन में जाकर के क्वेश्चन खत्म हुआ है. कितना लेंथी ये क्वेश्चन है. तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. अब अगला क्वेश्चन हम अगला मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड करेंगे जिसका नाम है द सीकेंट द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन or the method of false position, also known as false position or method of interpolation method या false position method करेंगे. थैंक यू, धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें. थैंक यू.